Hello students, very good morning to all of you. Today we are going to discuss the plus 2 chemistry sample paper 04 जो 4 है sample paper वो आप डिस्कस करने जा रहे हैं. So this is class chemistry, plus 2 class chemistry. So total marks that is a 70 marks and that is a time allowed 3 hours. So एक information मैं देना चाहांगा बच्चे, अगर ज़रूर तुसी इन्हां सारे पेपर दे सोल्यूशन कवर करना चाहते हो तो सो मैं कुछ रिकमेंडेड करांगा लास्ट विच इस पेपर दे सोल्यूशन दे विच. सो नैक्सट आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन विच हैविंग द there is no change in volume and no change in delta H mixing, enthalpy change mixing. So it always rolls slow. Ideal solution which always rolls slow. This is also right statement. Delta H mixing is 0, delta V mixing is 0. So correct answer which is not correct, that is delta S mixing is 0. Entropy change in mixing is 0. That is not for the ideal solution. So next question है, the colligative property of dilute solution depend upon. So first है nature of solute, nature of solvent, nature of particles of solute and the molecular mass of a solute having highest boiling point. So colligative property that is depend upon the number of solute particles, doesn't depend upon the nature they depend नहीं करती हैं, that is the number of solute particles. So option C is the correct answer. नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल डिपेंड करते हैं. दीज आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी साढ़े सिलेबस के विच है. सो फर्स्ट दैट इज़ ए रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड दैट इज़ ए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड दैट इज़ ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन दैट इज़ ए ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है जी. नेक्स्ट देख रहे हैं दैट इज़ ए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी आर. मोलर कंडक्टिविटी द यूनिट्स दैट इज़ K इंटू 1000 फॉर्मूला होंदा होता है. ठीक है, ओवर M. सो ये यूनिट की होंदी है सीमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स. ठीक है, मोल इनवर्स. सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन डी इज सीमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स. दैट इज द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट है द मेटल यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन. गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द कोरोजन बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द जिंक मेटल. सो जिंक के नाल जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं आयरन नू, दैट इज़ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द कोरोजन, दैट इज़ कॉल्ड एज ए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, सो दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन मैनी टाइम्स मैनी एग्जाम्स. ठीक है, in the dry cell which of the following is the electrolyte. In case of a dry cell, that is the main electrolyte used, that is a ammonium chloride. ठीक है, is the ammonium chloride and zinc chloride. Ammonium chloride is the electrolyte used in the dry cell. Next question, the reaction rate constant can be defined as the rate of reaction when each of a reactant concentration rate of reaction become equal to rate constant when the concentration of a reactant is unity. अगर वो 1 हो जाएगी तो rate of constant ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफाइंड कर सकते हैं. सो इट इज़ आंसर दैट करेक्ट आंसर दैट इज़ ए बी ऑप्शन, दैट इज़ ए यूनिटी. ठीक है जी. सो नेक्स्ट चलते हैं, वट इफेक्ट डज द टेम्परेचर हैव ऑन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जिस तरह सानू सब नू पता है कि फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड जिहड़ा हैगा दैट इज़ रिटन इन दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के. सो ये कितने भी जो टैंपरेचर है वो गल नहीं हैगी है, ओनली रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड है हाफ लाइफ पीरियड. इट इज़ इफेक्ट ऑफ टैंपरेचर. वट डज इफेक्ट डज टैंपरेचर ऑन द हाफ लाइफ पीरियड, इट रिमेन्स द सेम. ठीक है, इस टैंपरेचर का कोई इफेक्ट नहीं है. नेक्स्ट है, व्हेन द टैंपरेचर राइजेज वट हैपन टू द पीक ऑफ द कर्व इन द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सो आप सारे नू पता है कि जो भी आप गल करते हैं तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जी इस तरह होंगी है. तो जेकर आप देखा जाए तो वो टैंपरेचर राइज, अगर टैंपरेचर राइज कर जाता तो वो होर ज़्यादा जाती तो फॉरवर्ड ही है, बट होर की शार्प तो बेंड हो जाती है. ठीक है, दैट इज़ ए शिफ्ट फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड हो जाती है.
ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। ठीक है, आप जिस तरह कंडीशन ਨੂੰ फिल रीड करते हैं मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एफ डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज डेंसिटी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ एंड 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन्स पर वाटर कैलकुलेट द मोलैलिटी। मोलैलिटी ਆਪਾਂ पता करांगे, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट सारा कुछ गिवन है सानू, सो इत्थे आप ईजिली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नैक्सट आप शो करा। नैक्सट क्वेश्चन है द अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है जी। सो नैक्सट है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। विटामिन बी, इतने कुछ कन्फ्यूजन है, B12 होएगा। B12 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोआर्डिनेशन कंपाउंड। B12 जिहड़ा हुंदा दैट इज़ अ साइनोकोबालामिन, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोआर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द एम्बीडेंटेड लिगेंड आर दोज लिगेंड विच कैन ligate through only one atom। so condition ambient which can ligate more than one site ਹੁੰਦਾ है। सो इत्थे through only one site लिखिया होया, सो दिस इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि एम्बीडेंटेड दे विच लिगेंड किसी साइड तो भी डोनेशन दे नाल डोनर एटम बन सकता गा। सो नैक्सट है निकल Cl4। इस क्वेश्चन पेपर निकल Cl4 होएगा इत्थे। हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। So this is also a true statement because this has a tetrahedral geometry. Next, oxidation state of nickel CO4, that is a carbonyl zero field neutral ligand आ जाएगा साढ़े को, फिर x प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। सो साढ़े को x जीरो आ जाएगा। ऑक्सीजन स्टेट निकल दी +2 है। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स है। नेक्स्ट है चैलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कंप्लैक्स दैन मोनोडेंटेड, ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जो जितनी ज़्यादा चलेशन होएगी। नेक्स्ट है इथेन 1,2-diamine इज ए न्यूट्रल डाइडेंटेट एंड चैलेटिंग लिगेंड। दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल भी हैगा, डाइडेंटेट भी हैगा एंड चैलेटिंग लिगेंड भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट दैट इज ए पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन विच कैन बी ईजीली कंप्लीटेड। नेक्स्ट सैक्शन बी टाइप आ जाती है जिहदे विच न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन and temperature given, kb is given, molar mass also given, we can easily solve। next again numerical type question है साढ़े कोल, ठीक है जी। उस तो बाद इन्हें चैप्टर के क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन है, नेक्स्ट 3 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन है, तो फिर नेक्स्ट है 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो आप स्टार्ट करते हैं टर्न बाई टर्न। सो फर्स्ट क्वेश्चन साढ़े को जिस तरह है, the boiling point of benzene that is given, ठीक है, when 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। सो ये साढ़े को सब तो पहले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करांगे जो कि टैंपरेचर चेंजेस के नाल साढ़े को आ रहा। सो 354.11 माइनस 353.23 अगर करांगे साढ़े को टैंपरेचर आ रहा। नेक्स्ट WV सानू वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट गिवन है, weight of solvent already given है, kb value already given है। so as we know delta tb equal to kb into m, kb into m that is a molarity। molarity ਦਾ जो formula put करांगे साढ़े को वाला formula complete ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ mb ਦੀ value ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ molar mass of solute by putting the all values, then solve it, we can get the answer 57.5 gram per mole। so this is the first numerical, so this is based upon the elevation in boiling point। similarly next question, that is a commercial available sample of sulfuric acid, 15% sulfuric acid है, and calculate the molarity। weight of solute given है, weight of solvent given है, gram moles of solute also calculated, ठीक है, 15/98। next by using the formula density equal mass per unit volume, we can calculate the volume, that is mass over density, put the value and we will get the answer 90.9 ml।
Then put the formula of molarity, that is the number of moles of solute dissolved in volume of solution, that is volume multiple by 1000. So put करेंगे वैल्यू, सॉल्व करेंगे, साढ़े को आंसर आ जाएगा 1.68 मोलर. सो इसी दो न्यूमेरिकल्स. सो नेक्स्ट है अगेन solution chapter the question कि Henry law constant and significance की है. So as we know the Henry law constant, Henry law, it is defined as the partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of the gas, that can be written, and where when we remove the proportionality constant we will get the KH, that is called as a Henry's constant. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच, जिन्नी के एच की वैल्यू ज़्यादा होएगी लोअर इज़ द सोलबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस, जिन्नी के एच की वैल्यू ज़्यादा होया करेगी, के एच ज़्यादा तो उन्नी सोलबिलिटी के अंदर सबस्टांस की घट होया करेगी. एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, एंड इट होल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस. एज के एच इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, के एच इन टेम्परेचर राइज करेंगे तो के एच भी इंक्रीज करेगा. सो सोलबिलिटी डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, सोलबिलिटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर राइज करन दे नाल. नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, A first order reaction shows time required for 99% completion of a first order reaction is twice the time required for 90%. साढ़े कोल दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइम रिक्वायर्ड निकालांगे. 99% ਲਈ ਤੇ 90% ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, that is T99% that become equal to twice the T90% reaction. So start करते हैं from first order reaction. As we know first order reaction T is equal to 2.303 over K log A naught over A, and time required for 99% completion, that is a T99% equal to 2.303 over K log 100 over 100 minus 99, that is a log नीचे 1 आ जाएगा 100 over 1. सो सॉल्व करांगे इसनों वैल्यू ਨੂੰ. सो वी विल गेट द आंसर. सो सिमिलरली इतने तक साढ़े को ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ. ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ T90% ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ. T90% ਅਗੇਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ equation T is equal to 2.303 over K log initial concentration over final concentration. इतने 90% completion है, so T90% become equal to 2.303 over K log 100 over 100 minus 90. सो इन्हें सॉल्व करांगे साढ़े को लेवल आंसर आ जाएगा. सो 1 and 2 इक्वेशन तो ज़रूर डिवाइड करांगे. सो T99% over T90%, दैट बिकम इक्वल टू ट्वाइस वैल्यू आ जाएगी. T99% बिकम इक्वल टू ट्वाइस द T90%. सो इस तरह आप सॉल्व करांगे. हैंस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट बिकम ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन. सो ईजीली आप कर पावांगे. सो नेक्स्ट है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो स्पैसीफिक रेट कॉन्स्टेंट सानू गिवन है. सो टी हाफ निकाल लवांगे ਆਪਾਂ, बिकम इक्वल टू 0.693 ओवर के ਦੀ वैल्यू पुट करांगे तो साढ़े को आंसर आ जाएगा 3.47 मल्टीपल 10⁻³ सेकेंड इनवर्स. ठीक है. सो नेक्स्ट है वाइड transition metal form alloy with transition metal easily. So transition metal they can easily form alloy because the reason is the tendency of a transition metal to form alloy can be explained on the basis of their size. The atomic size of transition metals are very similar, and hence the crystal lattice of atom of one atom can readily replace with the atom of another transition metal. The result in the formation of alloys, for example steel, iron alloy with the carbon. So this is the answer. They can easily form the alloys जिस तरह एग्जाम्पल दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल है जिहदे विच सानू मास ऑफ सल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 25 ग्राम, एंड चेंज इन elevation boiling point that can also be calculated by given temperatures conditions. 56.86 minus 56.38, we will get 0.48 degree centigrade. Next kb value is also given. So again using the relation kb delta T be equal to kb into m. ठीक है, m is the molarity, put the value of molarity terms and we can easily calculate mb value from this relationship. So put the value kb, that is 1.72, mb that is 1.80, 1000 divided by delta tv 0.48 multiple mass of solvent 25.
So it will give the answer, that is a 258 gram per mole is the correct answer for molar mass of solute. Next again numerical, that is also on the elevation boiling point. So which elevation boiling point can be calculated from the given temperature, that is a TB 100 TB नोट 96.63. सो इतों आप डेल्टा TB निकाल लवांगे. मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है सानू, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी गिवन है, मोलर मास ऑफ सल्यूट दैट इज M2 दैट इज 342. सो मास ऑफ सुक्रोज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਅਗੇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ दैट इज डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M. ठीक है, तो इत्थे मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट करांगे इत्थे पूरी तरह कंडीशन दे विच. तो M जिहड़ी हैगी है MB उन्होंने M2 then from formula W2 that is मास जिहड़ा वो कैलकुलेट कर लवांगे. सो इहदे विच M2 की वैल्यू पुट करांगे, W1 की वैल्यू डेल्टा TB सानू निकाल लिया आपां 1000 KB की वैल्यू पुट करांगे. सो वी विल गेट द आंसर 1108.2 ग्राम. सो ये साढ़े को मास आ जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को, सो ये नैक्सट क्वेश्चन की है कि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फ्रीजेज एट अ लोअर टेम्परेचर दैन वाटर बट बॉयल एट हायर टेम्परेचर दैन वाटर. वाई? कोई सोडियम क्लोराइड है सोल्यूशन वो प्रिपेयर कर लिए तो वो फ्रीज करेगा एट लो टेम्परेचर, काफ़ी टेम्परेचर लो तो फ्रीज करेगा बट दैन वाटर के नालों बट बॉयल करांगे एट ए हायर टेम्परेचर दैन वाटर बट बॉयल हाई. द रीज़न इज़ sodium chloride that is a non-volatile solute. The freezing point of a liquid decreases. Freezing point decrease करता पे कारण किया on addition of a non-volatile solute. So solution of NaCl freezes at temperature lower than freezing point because NaCl is a non-volatile solute. But on the other hand, there is a elevation boiling point on addition of a non-volatile solute. So boiling point of NaCl is more than that of water. ठीक है, क्योंकि ये मेन रीज़न दैट इज़ ए NaCl दैट इज़ ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट. ड्यू टू दैट कंडीशन आर अपोज. नेक्स्ट है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन. साढ़े कोल की वैल्यू गिवन है, कंडक्टिविटी भी गिवन है, मोलरिटी कंसनट्रेशन भी सानू गिवन है. सो बाय यूजिंग द मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला दैट इज़ इक्वल टू K इंटू 1000/m. सो पुट करांगे साढ़े कोल मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी. ठीक है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, सो दिस इज द रीजन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े कोल, वाई डू ट्रांजिशन मेटल एग्जिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन? बिकॉज द इन केस ऑफ वन ट्रांजिशन मेटल अनदर ट्रांजिशन मेटल बोथ हैविंग द अनपेड इलेक्ट्रॉन बोथ हैव टेंडेंसी टू शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन. व्हेन शेयर दैट विल फॉर्म ए बॉन्ड बिटवीन them. As the bond formed by the valence electron that become more stronger, they have all tendency. So if the metal have more and more number of valence electron, they have more and more number of tendency to form the bond by sharing the electron, and hence bond become stronger and the force of attraction become stronger binding between the metals. Hence they need large enthalpy of atomization to break this bond. ठीक है, so because the large number of molecule unpaired electron of their atoms, they have a stronger interatomic interaction and hence stronger bonding between the atoms resulting in higher enthalpy of atomization. ਸੋ ਨੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ. ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਫॉर्म ए बॉन्ड. अगर बॉन्ड बना लेंगे हैं सो उस बॉन्ड स्ट्रोंगर हो जाता. सो इस तरह ट्रांजिशन मैटल के कोल जो मैक्सीमम तो मैक्सीमम ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अनपेड इलैक्ट्रॉन होणगे तो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयरिंग होएगी तो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. सो जिन्नी ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी तो उन्ना मैटल बॉन्ड स्ट्रोंग हो जाएगा. जिन्ना बॉन्ड स्ट्रोंग हो जाएगा उन्होंने ब्रेक करना डिफिकल्ट है. सो उसके एटम बनाने के लिए जी इंथैल्पी चाहिए है दैट बिकम लार्ज अमाउंट एंड हैंस इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बिकम हाई. ठीक है जी, so this is the question. Next, the difference between the double salt and coordination compound. In case of a double salt that exists in the solid state and associate in the liquid state. ठीक है जी, and coordination compound that exists in the solid as well as in liquid state. ठीक है,
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ they lose their identity in the solution, ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਐਂਡ the coordination compound they do not completely lose its identity, ठीक है, completely lose नहीं करते हैं. Next, the properties of double salt are essential the same as that of a constituent compound. So coordination compound, the properties of a coordination compound are different from the constituent. And the double salt, that is a double salt metal except their normal valency exists करते हैं, and a coordination compound that is surrounded by number of oppositely charged ions. ठीक है जी. इसी साढ़ा डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को what are inner and outer orbital complexes. So again बहुत वधी क्वेश्चन है. So in case of inner orbital complex, the complex having involving n-1d orbital, that is the inner d orbital in the hybridization, and all cases of d2sp3 hybridization are called inner orbital complex. In the formation of inner orbital complex, the electron of the metal are forced to pair, and hence the complex will be either diamagnetic or will have lesser number of unpaired electron. So such complex is called as a low spin complex. ठीक है जी. So inner complex है जिसमें n-1 d orbital use करते हैं and they d2sp3 hybridization form करते हैं, that is called inner orbital complex. So inner complex ਦੇ ਵਿੱਚ metal are forced to pair, metal forcefully pair हो जाते हैं, so called as a diamagnetic or have a lesser number of unpaired electron. Example ਸਾਡੇ को FeCN6 4 negative, FeCN6 3 negative. So next है ਸਾਡੇ को outer orbital complex, the complex having the nd orbital or all these cases sp3d2 outer side are a d orbital hybridization, that is called as a outer orbital complex. These complex has large number of unpaired electron and known as the high spin complex कह देंगे अपन. ठीक है. एग्जाम्पल CuF6 3 नेगेटिव, FeCu Fe water 6 3 पॉजिटिव. ठीक है. सो नेक्स्ट है साढ़े को again difference between fibrous and globular protein. So in case of globular protein there is a cross linking in the condensation. ठीक है. cross linking कह देने ਆਪਾਂ condensation ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, and this is a linear condensation कह देने fibrous ਦੇ ਵਿੱਚ. ठीक है. These are soluble in water or solution of acid base salt ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ soluble ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, and fibrous that is insoluble in the common solvent but soluble in strong acid. ठीक है. Globular protein, these are stabilized by the internal hydrogen bond interaction, and fibrous there is a formation of extensive hydrogen bonding between the neighboring chain. And globular protein, for example albumin in egg and all enzyme hormones, and fibrous ਦੇ ਵਿੱਚ myosin in muscle, keratin in hair and fibrin in the silk. ठीक है. So this is the difference. Next again difference the same chapter biomolecule. What is the difference between essential and non-essential amino acid? So essential and non-essential amino acid which cannot be synthesized in the body and must therefore obtain through a diet are known as the essential amino acid, and the amino acid which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acid. Essential amino acid the example lysine, valine, leucine. ठीक है. LVL कह सकते हैं अपन लाइसिन, वैलिन, लूसिन. ठीक है. एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट इज ए ग्लाइसिन, एलेनिन एंड प्रोलिन. ठीक है. इज ए एग्जांपल ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. नेक्स्ट साढ़े को न्यूमेरिकल है अगेन एक्टिवेशन एनर्जी का. एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ log K2 over K1 equal to EA over 2.303 R T2 minus T1 over T1 T2. सो सानू K2 over K1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ को क्वाड्रपल रेट कॉन्स्टेंट है. ठीक है. 4 टाइम्स हो जाएगा. टेंपरेचर T1 गिवन है 293 कैलविन, T2 भी गिवन है 313 कैलविन. सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 आ जाएगा. log 4 equal to EA over 2.303 over 8.314 हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर. ठीक है. डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई टेम्परेचर. सो इतों आप सॉल्व करके EA एक्टिवेशन एनर्जी जो निकालेंगे दैट विल बिकम इक्वल टू 52.86 किलोजोल पर मोल साढ़े को वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड न्यूमेरिकल. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल साढ़े को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. So as we know T is equal to 2.303 over K log initial concentration over final concentration,
as in the question is given as a 30% completion in 40 minutes at so k साढ़े को आ जाएगा 2.303 over 40 minutes temperature full करांगे एंड 100 over 30% माइनस करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 70 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 8.918 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਮਿੰਟ ਇਨਵਰਸ so as we know we have to calculate the t half life period and formula of t half life become equal to t half equal to 0.693 over k सो इच पुट करांगे वैल्यू की रेट कॉन्स्टेंट दी तो सोल्व करांगे सो अप्रोक्सीमेटली 77.7 मिनट साढ़े को आंसर आ जाएगा सो नेक्स्ट है साढ़े को न्यूमेरिकल दैट इज एन एनएस वेस्ट इक्वेशन सो एट एनोड दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन लिखांगे अपना एंड एट कैथोड रिडक्शन ऑफ सेल रिएक्शन लिखांगे then overall cell reaction and after that we have to write the Nernst equation so Nernst equation लिखांगे E cell become equal to E naught cell minus 0.059 over n log of final concentration over initial concentration तो जिस तरह आप फिल करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ E cell ਸਾਡੇ को इस तरह सोल्व करांगे ਸਾਡੇ को ਆਹ ਵਾਲੀ वैल्यू आ जाएगी तो जो ਇਹਨਾਂ ਦੀ वैल्यू पुट करांगे ਸਾਡੇ को log ਨੂੰ सोल्व करांगे तो ਸਾਡੇ को लास्ट ਵਿੱਚ आंसर आ जाएगा 0.25 वोल्ट ठीक है नेक्स्ट साढ़े को इसी नर्नस्ट इक्वेशन नेक्स्ट है साढ़े को कोलर शला वेस्ट इलैक्ट्रोकैमिकल चैप्टर का क्वेश्चन है सो ये की है साढ़े को मोलर कनेक्टिविटी NaI सोडियम आयोडाइड की वैल्यू सन गिवन है सोडियम एसीटेट की वैल्यू गिवन है मैग्नीशियम एसीटेट की वैल्यू गिवन है सो इस तो आप कैलकुलेट करांगे MgI2 सो पहली तो तीसरी इक्वेशन तो अगर देखा जाए तो उन्होंने सम करके तो साढ़े को MgI2 बनेगा so MgI2 by taking the third equation plus 2 times of first equation minus करांगे अपन second equation तो solve करांगे सारा साढ़े को आंसर आ जाएगा that is a 30.66 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स so next है साढ़े को calculate the gives energy of a reaction cell साढ़े को cell representation given है zinc to zinc to positive copper to positive to copper and reduction potential are given f that is given calculate the maximum work done calculate करना आपा this is also called as a Daniell cell ठीक है so at anode oxidation of cell reaction at cathode that is reduction of cell reaction then overall cell reaction आपा लिखांगे so delta G naught become equal to minus NF E naught cell so इधर वैल्यू सारी पुट करांगे E naught आपा निकाल ली that is cathode minus anode ठीक है जी सो इन्हें सॉल्व करांगे साढ़े को आंसर आ जाए -212.3 किलोजूल पर मोल नेक्स्ट आप देखिए अगेन नर्नस्ट इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल कैलकुलेट सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है अगेन उसी स्टेप के अकॉर्डिंग एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन लिखांगे एट कैथोड रिडक्शन ऑफ सेल रिएक्शन लिखांगे दैन ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखांगे सो ये नर्नस्ट इक्वेशन लिखांगे फिर E cell become equal to E naught cell minus 0.059 over n log concentration of product over reactant लिखांगे तो सो ये E naught cell कैथोड माइनस एनोड करके कैलकुलेट करके लिखांगे सो बाकी सारी वैल्यू पुट करांगे लॉग कैलकुलेट करांगे साढ़े को आंसर आ जाएगा 0.27 वोल्ट ठीक है जी सो दिस इज़ द मैथड नैक्सट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता 5 मार्क्स के प्रैपरेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट ठीक है सो दिस इज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द MnO2 with KOH and oxidation step with heating that will form a potassium manganate ठीक है with water and potassium manganate when treated with the HCl solution that will form a potassium permanganate KMnO4 the preparation with an MnO2 water and KCl so KMnO4 this is the best preparation method ठीक है next है transition metal and their compound are act as good catalyst so many of transition metal and their compound that is found to act as a catalyst because of the presence of incomplete D subshell they can form unstable intermediate product of with the reactant for example finely divided nickel platinum palladium are used as catalyst in the hydrogenation iron and molybdenum are used as catalyst in the manufacture of ammonia from nitrogen and hydrogen gases in the Haber process so this is the example so next question साढ़े को हैगा
डिफरेंस बिटवीन द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड मैक्सिमम टाइम रिपीट होया सो ये डिस्कस करांगे सो फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन लैंथेनाइड मेनली फॉर्म +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सम एक्सपेक्टेड सम show +2 and +4 oxidation state, and in actinide that will show +3 oxidation state and higher oxidation states such as +4 5 6 7. Binding energy of 4f are higher, and actinide that is a binding energy 5f are lower. Next, shielding effect, 4f electron have greater shielding effect and 4f electron have poor shielding effect. This is the difference. Next question, the metal exhibit, that is the metal have tendency to show variable oxidation state. The variable oxidation state of transition metal are due to also available of n-1d and ns electron, and they have tendency to form bond as the energy of an ultimate d orbital and ultimate s orbital are nearly same. So sum total of ns and n paired n-1d electron determine the highest oxidation state by the transition complexes ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ they will show the large oxidation state. Next, structure of a Cr2O7. This is the structure Cr oxygen oxygen. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 oxygen double bonded है, 2 that is a show 2 negative charge, that is a single bonding Cr2O7. Next, why transition metal show color compound. The color of transition metal compound may be attributed due to the presence of incomplete n-1d subshell. In case of compound the transition metal, the energy of 5d orbitals in the same subshell do not remain equal under the influence of approaching the ions. When ligand are approaching the central line, d orbital that is split into 2 energy level further वो split कर जाते हैं. So अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ they again ligand are approaching, they will gain the energy and the electron will move to the high energy state. Then as the high energy state become unstable, then move back to the ground energy state. So the energy released from that process fall into the visible region and that will show color. So this whole process is also called as a dd transition. So d orbital to transition करते पे low energy to high energy, so can be permitted from one energy to another shell. This is also called as a dd transition भी कहते हैं ਆਪਾਂ जिस तरह ਆਪਾਂ देख रहे हैं ਇੱਥੇ हम लो ग्राउंड एनर्जी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ એનર્ਜੀ ऑर्बिटल दैट इज़ अनस्टेबल है वापस आएगा. सो शो की करता पे डी ट्रांजिशन शो करता पे. सो वापस आएगा, एनर्जी फॉल करेगी विजिबल रीजन, दैट विल शो कलर शो करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है विच इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम 2 पॉजिटिव. सो अपन को पता क्रोमियम 2 पॉजिटिव दैट इज़ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए 3d4 है. अगर इलैक्ट्रॉन लॉस कर जाता दैट विल फॉर्म है 3d3 बन जाता ऑक्सीडाइज टू Cr3 पॉजिटिव. इन रिएक्शन क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता फिर सो क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया. सिमिलरली रिएक्शन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन है that is act as a oxidizing agent. वो Fe2 पॉजिटिव आयन D6 है. अगर वो D6 है that will changes into the D5. ठीक है. सो D5 ਦੇ ਵਿੱਚ easily change कर जाएगा. so D3 is more stable as compared to D5. so this is D3 T2G is a half filled हो जाता, stability show कर जाता. next last question, the D1 configuration is very unstable in the transition metal ions. So D1 configuration, the configuration of D1 configuration have tendency to lose the only one electron to acquire the nearest highest stable noble gas configuration. Hence D1 configuration is very unstable. क्योंकि D1 configuration D1 एक इलेक्ट्रॉन ਹੁੰਦਾ है तो D orbital की tendency है कि एक ਨੂੰ लॉस कर देवे तो गेन कर ले हायर स्टेबल noble gas configuration. So this is a unstable. सो डियर स्टूडेंट्स लास्ट ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਵਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਲਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਸਭ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ. ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਐਂਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਪੈਸੀਮਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ.
So thank you and all the best to all the students, and hope that all of you will get good marks. So all the best. Thank you.